Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 22nd of April. The session will be quite interesting and important students, so stay tuned with us till the end. Students, in this video we will be talking about the gig economy, that how we can improve it. For this, a partnership has been done recently with Swiggy. Next thing, we will be talking about Central Railway. They have launched India's first onboard ATM on Panchvati Express. Next thing, we will be talking about snow persistence declines in Ganga, Indus and Brahmaputra basins. We will be discussing it in detail. And next thing we will be talking about is the Desert Flag 10. This was an exercise that was held in UAE. All these things and many more will be discussed. So stay tuned with us till the end. Also students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs students. Ministry of Labour and Employment and Swiggy, they have joined hands to boost the gig economy jobs via NCS portal. NCS is your National Career Service portal. These gig workers, they include your delivery boys, right? So it is one of the major source of employment for many people right now. That includes providing them by Swiggy, Zomato, Blinkit, Zepto and many more. Correct? Take a note of this. And with this, Swiggy will regularly post the verified gig and delivery job opportunities on this NCS portal and will conduct hiring through this application. If we look at one of the interesting data, it states that since 31st of January 2025, this NCS portal is hosting over 1.25 crore active job seekers and 40 lakh registered employees. Next, here you can see Swiggy will regularly post verified gig and delivery job opportunities on this portal and conduct hiring through this. This will focus on hiring specifically for youth, women and those seeking flexible work. Next is Central Railway has launched India's first onboard ATM on Panchvati Express. Take a note of this. Central Railways, that is headquartered in Mumbai, Maharashtra, they collaborated with Pune, Maharashtra based Bank of Maharashtra and has launched India's first onboard ATM on Mumbai manned Panchvati Express under the new innovative non-fare revenue idea scheme, that is NINFRIS, that will enhance the passenger convenience and boost the non-fare revenue. The ATMs here was installed in the train. So directly remember, if you remember last few weeks, there was also many reels that were circulating on the social media platforms that were talking about an ATM that has been installed in the trains. Correct? So Central Railway, they have launched India's first onboard ATM on Panchvati Express. Next is international affairs students. Snow persistence declines in Ganga, Indus and Brahmaputra basins as per the data released by ICI MOD. Right? And what is it saying? That the level of snow, average snow in these basins are declining. What is the reason? It is climate change and the rise in temperature. Right? Because of which the snow is melting. And this year in 2025, here the snow in these basins has declined on an average of 23.6% to the normal. This data released by ICI MOD, that is International Center for Integrated Mountain Development. Where is the headquarter of this? It is in Nepal, Kathmandu. Next,
Next is IAF, Indian Air Force participated in multinational exercise that is Desert Flag 10 in United Arab Emirates, that is UAE. Right? So I repeat, Indian Air Force, they participated in UAE in an exercise that is Desert Flag 10. Take a note of this. Right? This edition, it hosted air forces from 12 countries that include India, Australia, Bahrain, Germany, Qatar, Saudi Arabia, UK, USA, and the host nation was UAE. From Indian side, MiG-29 and Jaguar took part in this exercise. Next is UNESCO. Only 60% countries have legislations, standards for food, beverages in school. So a report was released by UNESCO. This latest UNESCO's latest publication was GEM, that is Global Education Monitoring Report. This is talking about and saying that only 60% of the schools, right, they have proper standards for food and beverages in school. They look after the concerns over the global commitment to the student health. Correct? And here this report says as 60%, if we see that only 93 out of 187 countries have legislations that are compulsory standards for providing food and beverages in school. Next, here you can see also further only 3 out of 28 countries have conducted assessments at regular interval times and used that information, which included changes in attitudes and perceptions about food and nutrition, knowledge, food practice, and among others. Next is Japan. Japan to gift Shinkansen E5 and E3 series for India's bullet train project. So 2 bullet trains will be gifted by Japan to our country India. Right? Take a note of this. These are your 2 Shinkansen trains. As you can see, these are the bullet trains. E5 and E3 series will be gifted. These trains will be supporting the testing that will be taking place for the first bullet train project, that is Mumbai Ahmedabad high speed rail corridor. Right? And these trains, they are set to be delivered earlier in 2026, and they will be helping to test the proper project of this India's bullet train project, and it will help India to also make these trains in India by doing reverse engineering. These trains will be operating at 320 km per hour. Next is banking and finance. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has unveiled the BSE coin logo and index to commemorate 105 years legacy. Nirmala Sitharaman ma'am, our finance minister, right? She has recently unveiled a 150 rupees commemorative coin. This coin is to celebrate 150 years of Bombay Stock Exchange. This is the Asia's oldest stock exchange and one of the largest in the world. The event was held at Geo World Convention Center, that was in Mumbai, Maharashtra. Right? While addressing this event, Union Minister appreciated the BSE's technological advancement and its important role in India's economic development. Also, she highlighted that BSE, it processes overs worth 1500 crore rupees on daily basis. Also, the market cap of BSE has reached 400 lakh crore. Right? If we talk about BSE, who is the managing director and chief executive officer here? Sundararaman Ramamurthy, headquartered in Mumbai, Maharashtra, established in 1875. Right? Then apart from this coin, remember Nirmala Sitharaman ma'am, she has also unveiled a logo, that is BSE at the rate of 150 logo and BSE 150 index. Right? They were also launched here. And here you can see further about the coin, 150 rupees coin composing of 50% silver, 40 copper, 5 nickel and 5 zinc, weighing 35 grams, and this is 44 millimeter in diameter. Next is PB Fintech gets the RBI's approval to operate as a online payment aggregator. I repeat, RBI granted in principle authorization to PB Pay Private Limited, a wholly owned subsidiary of Gurugram, Haryana based PB Fintech Limited, to operate as an online payment aggregator under Panchayat under the Payment and Settlement Systems Act of 2007. Take a note of this. Next is SEBI. They have approved the Capital Mind Financial Services to launch mutual fund businesses. I repeat, Bengaluru, Karnataka based Capital Mind Financial Service, they founded by Deepak Shenoy has received the approval from Mumbai, Maharashtra based SEBI to operate as a Capital Mind mutual fund. So they will be getting into the
mutual fund business. Next, Bajaj Alliance Life Insurance, they have launched Super Women term plan for specifically for women. So this is your Super Women term plan designed specifically for women, which aims to provide financial protection, health benefits and support for childcare. This new product covers 60 critical illnesses including breast, cervix and ovarian cancer. Next is economy and business. India's retail inflation drops to 5.5 year low at 3.34% in March 2025. I repeat, this is the India's retail inflation, correct, measured by CPI Consumer Price Inflation Index. It stands at 3.34%, right? If we talk about food inflation, it was at 2.69%. Core inflation, excluding food and fuel, was at 4.1%. Wholesale price index or inflation, that is WPI, was at a 6-month low of 2.05%. Correct? Take a note of this. Next is WTO, that is your World Trade Organization headquartered in Geneva, Switzerland, has projected a 0.2% decline in the global merchandise trade for FY25. This marks a downward revision from 3% growth forecast made in October 2024. Also, the global commercial service is projected to grow by 4% in 2025, whereas if we are talking about the global merchandise trade, it is slowing down and it is basically the projection is 0.2%, 0.2% less as compared to the earlier projections. Next is IISR has developed new light colored turmeric variety, that is IISR Surya. So this is the new light colored turmeric variety that has been named IISR Surya. IISR is your Indian Institute of Spices Research. This new variety features a light colored rhizome that meets the specific requirements of the modern powdering masala industry. It has a pleasant aroma expected to significantly benefit the farmers, especially in the production of high quality turmeric powder. Next is related to sports students. McLaren's Oscar Piastri has won the F1 Saudi Arabian Grand Prix to take the overall lead. Oscar Piastri, he's an Australian driver, or he belongs from Australia, right? And he drives for McLaren, correct? And he has won the F1 Saudi Arabian Grand Prix. This was held at the Jeddah circuit in Jeddah, Saudi Arabia, correct? And who was on the second position? Max Verstappen on the second position, drives for Red Bull. He's from Netherlands. And Charles Leclerc of Ferrari, he's from Monaco, was on the third position. Next is Obituary. Pope Francis, right, the first Italian American leader of the Roman Catholic Church, has recently passed away. As you can see him in the picture, Pope Francis passed away at the age of 88 in Vatican City, right? And he was born in 1936 in Argentina. Next is important day, students. UN Chinese Language Day observed on 20th of April. This is to promote multilingualism, cultural diversity and the equal use of the 6 official languages of United Nations. There is a theme here for this: Chinese language, a gift across time and space. And these are the days: UN Arabic Day on 18th December, UN English Day on 23rd April, UN French Day 20th March, UN Russian Day 6th of June and UN Spanish Language Day on 23rd of April. And then comes your UN Chinese Day on 20th of April. Correct? Next is your National Civil Services Day, observed on 21st of April, and it is to acknowledge and appreciate the important role played by civil servants in the nation's governance and development. This year it was the 17th edition of the National Civil Service Observance that was held. So that's all for the day, students. No, there are more. Wait. Next is World Creativity and Innovation Day, observed on 21st of April. This is to foster innovation, to create the importance about creativity and innovation and fostering human development and achieving the sustainable growth. Next is state news, students. MP to launch Krishak Kalyan scheme to boost farmers' income. MP is your Madhya Pradesh, right? So Madhya Pradesh state is to launch this Krishak Kalyan Yojana or scheme or mission that will unify the ongoing farmers' welfare schemes under a single, under various departments, right? So this will merge all those schemes to boost the farmers' income. Under this, you will be seeing fisheries department, animal husbandry, dairying, cooperative department, food, civil supplies, and more will be benefited. So that's all for the day. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. Next,
To tackle skilling challenges, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship co-hosted a high-level roundtable in April with which international organization to launch the India Skills Accelerative initiative. It was with World Economic Forum, right? So this initiative, it will bridge the skilling gap and across various sectors by collaboration. Correct? Take a note of this. And they have launched this India Skill Accelerator that will be focusing on providing what? Skills. Next, in April, Union Minister Ram Mohan Naidu inaugurated a state-of-the-art lab at Aircraft Accident Investigation Bureau that is focused on analyzing the crucial aviation tools. These tools, they include your digital flight data recorder and a cockpit voice recorder. So these two things are important, right? This lab, correct? This digital flight data recorder, correct? This is also basically a lab that is your black box lab that will be recording all the technicalities, all the status of the aircraft. Correct. So coming back, Ram Mohan Naidu ji inaugurated the state of the art lab that is a black box lab that is at the Aircraft Accident Investigation Bureau that is focused on the aviation tools such as your digital flight data recorder. That means the data of the flight will be recorded here. Also the cockpit voice recorder, that what the pilots are talking there, right, that will be recorded, because the pilots should be very mature, right? They should have the skills to do maneuvers whenever needed. Next, the Ministry of Port Shipping and Waterways launched a dedicated digital portal in April to facilitate ease of doing business and promote private sector participation. What is the name of that organization that developed this portal? This portal has been developed by whom? Ministry of Port Shipping and Waterways. So what is the portal? It is Inland Waterways Authority of India, right? So this is the organization, they have developed this portal. What this will do is this will promote ease of doing business, all the certification, all the permissions that are required in order to make trade through the port will be granted on this particular portal. Next, where was the India's first Himalayan high altitude atmospheric and climate research center inaugurated by Ministry of Science and Technology in April? So where was it? It was in Jammu and Kashmir. Correct. Take a note of this. This center will focus on climate forecasting, aerosol studies and cloud microphysics. Also, it will be focusing on the weather patterns. And this center is located at a 2250 meters height. Next, who received the final authorization to operate as an online payment aggregator from RBI in April 2025? It is Bharat Pay Resilient Payment System. They received the authorization from RBI to act as a payment aggregator, and they will be operating as a payment aggregator platform under the name Bharat Pay X. Next, in April, Idukki district earned the green tag after successful waste management efforts under the Malinya Muktam Navakram campaign. I repeat, Malinya Muktam Navakaralam campaign, right? Question asked here is that this Idukki district belongs to which state? So Idukki, as we all know, it belongs to Kerala, and they have earned the green tag after successful management of this waste management efforts. Right? This achievement was made possible through the joint efforts of the local bodies, businesses, schools, colleges and other offices where they collaborated and made this possible. Next, identify the state in India whose indigenous textile, rendia, silk and Khasi handloom products were granted the GI tag recently. So these two products, they belong from Meghalaya that got the GI tag recently. This rendia, right? It is the Khasi name for airy silk. Next is mention the organization that collaborated with the Cotton Association of India in April to boost bilateral cotton trade and enhance the cooperation in cotton production, trade trends, pricing and market insights. So which is that organization? It is Australian Cotton Shippers Association, right? So remember, Mumbai, Maharashtra based Cotton Association of India and Australian based Australian Cotton Shippers Association, they signed an MOU where they will be working on enhancing the bilateral trade in cotton between these two countries. Cotton is grown on the black soil that is also known as the Ragur soil. Next, which of the following airport is not in the list of the top 5 airports announced at the Skytrax World Airport Awards 2025 held in Mumbai, in Madrid, Spain? So which of the following airport is not among the top 5? It is Hong Kong International Airport is not among the top 5. Singapore's Changi Airport secured the first position in this index. Take a note of this. Next,
Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan headed India's delegation to the 2025 Agriculture Ministers Meet of Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, that is BIMSTEC. This meeting was held where? It was held in Nepal. Right? Take a note of this. Moving on, next, which country became the first African nation and the fourth country globally to sign a country partnership framework with International Solar Alliance in Nepal? And this is the fourth country. Before this, which are those? It is your Bangladesh, Bhutan and Cuba, and now it is Mauritius that became the fourth country and the first African nation to sign the country partnership framework with International Solar Alliance. Next, in April, which country signed the Artemis Accord, that is a set of the non-binding agreements established by NASA to cooperate, or basically to cooperative civil exploration of the outer space. What is this Artemis Accord? Artemis Accord states that space should be explored peacefully by all the nations, right? So this is for peaceful exploration of space. So which country recently signed the Artemis Accord? It was signed by Bangladesh. Next, who is the chairperson of a 6-member high-level committee constituted by SEBI in April to review the provisions for officials to disclose any conflicts of interest? So, who is the chairperson here? Pratyush Sinha. He is the chairperson of the 6-member high-level committee, right? And it was instituted, or it was established by SEBI, correct? And it is for officials so that they disclose any conflicts of interest. They will be submitting their report within the 3 months of the constitution of this committee. Next, General Khamti Sifadon, the president of Daesh, passed away at the age of 102. So he was the president of Lao People's Democratic Republic who recently passed away. Next, which state or union territory inaugurated the Apricot Blossom Festival on 10th of April with the aim of promoting tourism and cultural heritage? So, which is that state? Which is the state or union territory that recently inaugurated this Apricot Blossom Festival? It is Ladakh. Take a note of this. Next is the Ministry of Information and Broadcasting partnered with Maharashtra Film, Stage and Cultural Development Corporation Limited to establish India's first institute that is dedicated to animation, visual effects, gaming, comics and extended reality. So this name that institute that is said to be established at the Dadasaheb Phalke Film City in Goregaon, Mumbai. So what is the name of that institute? It is Indian Institute of Creative Technologies. Take a note of this, students. With the coming of AI, these creative things have become more advanced. Now a person can use these technologies and enhance their working on these technologies or on these creative side, right? Because making content has now become very easy, and if you know the right tools, you can scale it to very large portion. Next, the Ministry of Education announced a dash hike in the material cost under the Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman scheme, that is your Poshan scheme, that is also known as the midday meal scheme. So how much percent hike has been seen in the procurement of the materials such as your pulses, rice, lentils and so on? It is 9.5% hike has been seen here. Next, which country co-hosted the inaugural edition of IKIMIS exercise with India in April 2025? So which country is it? It is Tanzania, and India co-hosted this IKIMI exercise. Next, one more thing remember here, from Indian side it is INS Chennai and INS Kesari that took part in this exercise. This was a 6-day long exercise. Next, name the long-range glide bomb successfully tested by DRDO using the Sukhoi 30 Mark 1 fighter aircraft in April 2025. So name of this long-range glide bomb is Gaurav. Next, Padma awardee Kumudini Lakhia, who passed away in April, was a renowned she was a renowned Kathak dancer who recently passed away. She was honored with Padma Vibhushan in January 2025. Next is, when is the United Nations International Day of Human Spaceflight observed annually to celebrate the beginning of space era for mankind and highlight the role of space science and technology in promoting the sustainable development goals? So UN International Day of Human Spaceflight is observed on 12th of April, right? And since 2011 we are observing this. So first edition was observed in 2011. Next,
Next is which company achieved a significant milestone by constructing the world's first 3D printed train station, assembling the entire station in under 6 hours, replacing a wooden facility dating back to 1948. So which company achieved this significant milestone by constructing the world's first 3D printed train station? It is West Japan Railway Company. Take a note of this, important. And it was Japan only, if you remember, they developed the world's first wooden satellite also. Can you name that satellite? It is a few months back question, but do name it, right? This is your homework. Moving on. Next, to which country hosted the 8th meeting of the Joint Committee on Asia-India Trade in Goods Agreement that concluded on 14th of April. So it is our country India that hosted the 8th meeting of the Joint Committee on Asian-India Trade in Goods Agreement. Next is during the official 2-day visit of Italian Deputy Prime Minister Antonio Tajani to India from 11th to 12th of April, India and Italy, they signed a memorandum of understanding to strengthen the cooperation in which field? This was to strengthen the cooperation in the field of science and technology. Next, under the umbrella of the new scheme of petrochemicals, the scheme for setting up plastic parks is being implemented by Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers of Government of India. Question asked is this: how many such plastic parks have been approved across different states in India that will be established here, that will promote research and development? So a total of 10 such plastic parks has been approved here. Next, identify the organization that introduced a new category called Blue Category for industries based on essential environment services in April with the aim of managing pollution caused by anthropogenic activities. So, which is that organization that introduced this new category? It is Central Pollution Control Board, and this blue category will be provided to, or this certification will be provided to a industry for 2 years, and they will be monitoring that whether the pollution level is increasing or decreasing. If it is increasing, their certification will be revoked, and if they are not polluting and they are on a right track, then they will be continuing with this certification. With this certification, many investors, right, if the company is having the right certification here, this blue certification, this will enhance their funding also, right? That means more and more investors and VCs will be investing there based on this. Next, in April, Daniel Roy Gilchrist Nouba Azin was re-elected as the president of which country for a period of 4 years? So, elected by of Ecuador. Next, who has been elected as the new president of Gabon in April? Brice Clotaire Oligui Nguema was elected as the new president of Gabon. Next is mention the state where DRDO successfully conducted the field trial of the land version of vehicle mounted Mark 2A laser directed energy weapon. It is Andhra Pradesh, right? This is the state where DRDO, they successfully conducted the field trial of this land version of vehicle mounted Mark II laser directed energy weapon. Next, pop star Katy Perry, right? She was one of the 5 and one of the 6 women, total 6 women went into space recently, right? They used the New Shepard rocket. Name that company that took them into space. It is Blue Origin, right? And this New Shepard mission is also of Blue Origin only. Next, the Peruvian Nobel Prize winner Mario Vargas Llosa passed away at the age of 89 in Peru. He was awarded with the Nobel Prize in 2020. So he was honored with Nobel Prize in the field of literature in 2010, not 2020, in 2010, who recently passed away. Next, on the occasion of the World Quantum Day, observed on 14th of April, QNU Labs, a quantum cybersecurity startup that incubated at the IIT Madras, launched Dash, the world's first unique platform for seamless cryptography management across cloud, on-premise and hybrid environments. So it is to provide cybersecurity from attacks, because as the rise of AI happens, the cyber attacks will also be increasing, right? So question asked is that name that world's first unique platform that was launched. It was Q Shield, right? This was launched. This is a launched by QNU Labs, and this will help them basically help various other organizations from cyber security attacks, correct? So this will provide cyber security, cryptography. Cryptography is a base of technique where you make sure that your data is safe, right? It is encrypted. Next, on 8th of April, which state was honored with the top
with 2 top awards from the Unique Identification Authority of India for its outstanding Aadhaar implementation efforts. Which is it? It is Meghalaya state that was honored with the 2 top awards for their from the UIDI for their Aadhaar implementation effort. That is the best performing state first, right? And second is the excellence in the verification of adult Aadhaar enrollment. So with 2 of these awards they were awarded. Meghalaya state was awarded. Students, is our homework section. First question, tell me which edition of the Global Technology Summit stars in New Delhi. Which edition? Second question, tell me recently who has launched Unified Health Insurance Scheme, right? Who launched it, and it was launched by which state also? Tell me that. Third question, recently who celebrated the traditional harvest festival honoring the farmers and unity across regions? Okay, this is an easy one, our country India, right? Next, tell me which state became the first state to implement SC categorization. SC caste was divided into multiple categories. How many categories and which state did this? That became the first state to do so. Then fourth question, tell me recently which campus has recently opened in Dubai recently? That is an Indian campus. Fifth question, what is the repo rate now? And what percent of repo rate was reduced by RBI recently? Tell me that also. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 22 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे गिग इकोनॉमी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने की बात की जा रही है। देन हम बात करेंगे पहले एटीएम पे जो कि एक ट्रेन पे इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे जो स्नो है आपके गंगा इंदस एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन्स में, उसको वो कम होती हुई दिखी है, हमें डिक्लाइन होती हुई दिखी है। कितनी क्यों होती हुई दिखी है वो हम देखेंगे आगे। देन हम बात करेंगे डेजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज की, जो कि अभी यूएई में हुई। ऑल दीज क्वेश्चंस एंड ऑल दीज न्यूज़ एंड मेनी मोर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हमारे साथ तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. बात करते हैं नेशनल अफेयर से। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड स्विगी, इन्होंने पार्टनरशिप करी ताकि जो गिग इकोनॉमी जॉब्स है उसको बढ़ावा दिया जा सके एनसीएस पोर्टल पे, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पे जो लिस्टिंग की जाएगी स्विगी के द्वारा कि ये आपकी गिग जॉब्स अवेलेबल हैं, लॉजिस्टिक सेक्टर्स में ये जॉब्स अवेलेबल हैं। गिग जॉब्स बेसिकली आपकी आ जाती हैं और डिलीवरी जॉब्स, राइट? इनको लिस्ट किया जाएगा एंड इससे स्पेसिफिकली टारगेट किया जाएगा यंग इंडिविजुअल्स को, यूथ्स को, वीमेंस को, जो कि जॉब फ्लेक्सिबल आवर्स के तौर पे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, राइट? एंड इससे होगा क्या, ऑनबोर्डिंग ज़्यादा बेटर हो जाएगी, डिजिटल एम्पावरमेंट होगी एंड साथ साथ एक प्रॉपर डाटाबेस भी मेंटेन रहेगा। अगर हम एज ऑफ 31 जनवरी 2025 देखें तो एनसीएस पोर्टल पे 1.25 करोड़ एक्टिव जॉब सीकर्स हमें देखने को मिलते हैं कि लोग एक्टिवली इतनी जॉब्स ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंट्रल रेलवेज, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ऑनबोर्ड एटीएम ऑन पंचवती एक्सप्रेस। तो ये डायरेक्टली याद रखेंगे, एटीएम लाया गया है ट्रेन में, राइट? एंड एसी कोचेज में ये एटीएम को इस्टेब्लिश किया जाएगा। पंचवती एक्सप्रेस पे स्टार्टिंग में इसको लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। स्नो परसिस्टेंस डिक्लाइन इन गंगा इंदस एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन्स, मतलब इन एरियाज में जो स्नो का कवर होता था, राइट, जितनी बर्फ होती थी वो कम होती हुई दिखी है, राइट। स्पेसिफिकली अगर हम देखें 2025 में तो 23.6% का हमें रिडक्शन देखने को मिलता है इन द स्नो कवर, ये लोएस्ट है 23 साल में, करेक्ट। ये रिपोर्ट रिलीज की गई है ICIMOD के द्वारा, ये है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। रीजन क्या है इसका? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से जो टेम्परेचर है वो हमारा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया डेजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज में, ये UAE में हुई थी। ये लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई थी, तो ये UAE में देखने को मिली। फिर इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। इंडियन एयरफोर्स से किसका पार्टिसिपेशन देखने को मिला? किस एयरक्राफ्ट का? MiG-29 एंड जैगवार का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इस एक्सरसाइज में 12 कंट्रीज़ के एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, UK, USA एंड होस्ट नेशन था UAE। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनेस्को। ओनली 60% कंट्रीज हैव लेजिस्लेशन स्टैंडर्ड्स फॉर फूड बेवरेजेस इन स्कूल, मतलब ये डाटा बताता है, यूनेस्को ने बताया कि इनकी एक ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बोला कि 60% ऑफ द कंट्रीज, अगर वर्ल्ड में देखें 93 आउट ऑफ 187 कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने स्कूल में जो बच्चों को खाना प्रोवाइड कराया जाता है उसके प्रॉपर लेजिस्लेशंस हैं, उसके प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं, राइट, उनकी प्रॉपर गाइडलाइंस है कि इसी तरीके से यहाँ आपको खाना पहुँचाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी रिसेंटली जापान ने इंडिया को गिफ्ट करी बुलेट ट्रेन, 2 बुलेट ट्रेन यहाँ पे गिफ्ट की गई हैं, 2 बुलेट ट्रेन यहाँ पे गिफ्ट की गई, राइट। एक है शिंकेशन E5 एंड E3 सीरीज, E5 सीरीज एंड E3 सीरीज, राइट। ये इंडिया का जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, राइट, इसको यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। एंड ये 2 बुलेट ट्रेन्स 2026 में यहाँ पे डिलीवर की जाएंगी। एंड इनको यहाँ पे टेस्ट फेज के लिए रखा जाएगा कि कैसे हम इनको टेस्ट कर सकते हैं, क्या टेम्परेचर्स पे वर्क करेंगे, कितने क्या कंडीशंस होंगी, राइट, काफ़ी स्टडी करने के लिए। एंड फिर इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके इनको मेक इन इंडिया के तौर पे यहाँ पे इंडिया में भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम, इनके द्वारा BSE का कॉइन, एक लोगो एंड इंडेक्स लॉन्च किया टू कमेमोरेट 150 ईयर्स ऑफ द लेगेसी ऑफ BSE, राइट। तो BSE क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। इसका इवेंट जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हमें देखने को मिला था। एंड 150 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया है 150 साल की को सेलिब्रेट करने के लिए। अगर हम BSE की बात करें, यहीं पे निर्मला सीतारमण मैम के द्वारा BSE एट द रेट ऑफ 150 लोगो एंड BSE 150 इंडेक्स भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। यहाँ पे इन्होंने बताया कि BSE डेली 1500 करोड़ तक के ऑर्डर्स यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रोसेस कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। एंड इनकी जो अगर नेटवर्थ देखें, मार्केट कैप देखें तो 400 लाख करोड़ पहुँच गई है। BSE की अगर मैं बात करूं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? सुंदरारमन रमामूर्ति, हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स फेयर। PB फिनटेक, इनको RBI का अप्रूवल मिला, नॉट मीन्स अप्रूवल मिला टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। अब ये पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं जिसके बेसिस पे फर्दर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लोन बैंक से ले सकती हैं, राइट। तो ये आपका ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर हो गया, करेक्ट। इनको लाइसेंस मिल गया है PB पे प्राइवेट लिमिटेड को, या फिर हम बोले PB फिनटेक को, राइट, टू PB पे प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं सेबी, इन्होंने अप्रूव किया कैपिटल माइंड फिनटेक और कैपिटल माइंड फाइनेंशियल सर्विसेज को कि अपना एक म्यूचुअल फंड बिजनेस लॉन्च कर सकें, राइट। तो इनको अप्रूवल मिल गया कि अपना खुद का म्यूचुअल फंड बिजनेस लॉन्च कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने लॉन्च किया सुपर वीमेन टर्म प्लान फॉर वीमेन, राइट। ये आपका सुपर वीमेन टर्म प्लान रहेगा, स्पेसिफिकली फॉर वीमेन रहेगा, जो कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, हेल्थ बेनिफिट्स एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा फॉर चाइल्ड केयर। एंड ये जो नया प्रोडक्ट है ये 60 क्रिटिकल इलनेसेस को कवर करेगा, इंक्लूड ब्रेस्ट, सर्विक्स एंड ओवरियन कैंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पे स्टूडेंट्स। इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो ड्रॉप कर गया टू 5.5 ईयर लो एट 3.34% इन मार्च 2025, राइट। तो इन्फ्लेशन हमें कम होता हुआ देखा है, जो कि अच्छी चीज़ है इंडिया की मार्केट के लिए। फूड इन्फ्लेशन देखें तो 2.69% का रहेगा फूड इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जहाँ पे फूड एंड फ्यूल को हटा दूँ तो 4.1% का रहेगा। वहीं पे होलसेल प्राइस
इन्फ्लेशन की बात करें 2.05% का, ये लोएस्ट है पिछले 6 महीने का। वहीं पे अगर हम देखें इन्फ्लेशन से, कोकोनट ऑयल महंगा हो गया, कोकोनट गोल्ड 34% बढ़ता हुआ दिखा, ग्रेप्स महंगे होते हुए दिखे। वहीं पे आइटम्स विद द लोएस्ट इन्फ्लेशन देखें तो टोमेटो में काफ़ी कम इन्फ्लेशन है, जीरा में, गार्लिक में, जिंजर में, कॉलीफ्लावर में, इनमें काफ़ी कम इन्फ्लेशन देखने को मिली। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इन्होंने प्रोजेक्ट किया 0.2% का डिक्लाइन इन द ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड फॉर 2025। तो 2025 में 3% का प्रोजेक्शन किया गया था, लेकिन उससे 2.2% यहाँ पे कम कर दिया गया है। वहीं पे अगर हम देखें जो सर्विस सेक्टर है, ग्लोबल सर्विस सेक्टर, वो बढ़ता हुआ दिखेगा 4% से इन 2025। एंड एशिया में मॉडेस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी ऑफ 1.6% इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। वहीं पे यूरोप में 1% का एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिखेगा एंड 1.9% का इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिखेगा यूरोप में। एंड एक और चीज़ बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये जो टैरिफ वॉर चल रही है ना, तो यूएसए के इस टैरिफ वॉर से जो इन्फ्लेशन है ग्लोबली वो हमें बढ़ती हुई दिखेगी, राइट। इंडिया में भी काफ़ी कम इन्फ्लेशन है, राइट, जिसका इम्पैक्ट कभी कम देखने को मिल रहा है टैरिफ्स का में, लेकिन विद टाइम आप देखेंगे जो इन्फ्लेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में हमें। नेक्स्ट आ जाते हैं IISR, इन्होंने डेवलप किया नया लाइट कलर्ड टर्मरिक वेराइटी जो है IISR सूर्या। IISR है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, ये ICAR का ही आर्म है। इन्होंने नई वेराइटी डेवलप करी है टर्मरिक की, हल्दी की, जो है IISR सूर्या, राइट। बेटर प्लेजेंट अरोमा है इसका, राइट, लाइट का कलर रहेगा, राइजोम, लाइट कलर राइजोम्स इसमें देखने को मिलते हैं, करेक्ट, एंड ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। मैक्लेरन के ऑस्कर पिएस्ट्री, इन्होंने F1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपेन, जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। एंड थर्ड पोजीशन पर आ जाते हैं आपके चार्ल्स लेसलर, ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं एंड मोनाको से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट ऑब्यूटरी पर आते हैं, पॉप फ्रांसिस, राइट, इनका निधन हो गया। ये पहले लैटिन अमेरिकन लीडर थे ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 88 इन वेटिकन सिटी, राइट। 1936 अर्जेंटीना में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। UN चाइनीज़ लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। चाइनीज़ मल्टीलिंग्वेज या फिर ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली जो 6 इंपॉर्टेंट UN की लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, मल्टीलिंग्विज्म को प्रमोट करने के लिए। एंड चाइनीज़ की ये लैंग्वेज बेसिकली वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस मानी जाती है, इसकी कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम रहेगी चाइनीज़ लैंग्वेज अ गिफ्ट अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। इसी के अलावा कुछ और डेज देखें, जैसे UN अरेबिक लैंग्वेज डे 18 दिसंबर, UN इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल, UN फ्रेंच लैंग्वेज डे 20 मार्च, UN रशियन लैंग्वेज डे 6 जून, UN स्पेनिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल। इसके बाद आ जाते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे, 21 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है सिविल सर्वेंट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, उनके हार्डवर्क के लिए, एंड वो जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द नेशनल गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, 21 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है क्रिएटिविटी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, एंड क्या ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़। मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया कृषक कल्याण मिशन टू बूस्ट द फार्मर्स इनकम। आई रिपीट, ये स्कीम लॉन्च करी गई है MP कृषक कल्याण मिशन। इसके अंडर क्या होगा, जो फार्मर वेलफेयर स्कीम्स है ना, उनको वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंडर लाया जाएगा, यूनिफाई किया जाएगा, ताकि फार्मर्स की इनकम बढ़ाई जा सके, उनको बेटर बेनिफिट्स दे सके, बेटर फाइनेंसिंग उनकी की जा सके, राइट, प्रमोट किया जा सके क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाए, एंड नई नई टेक्नोलॉजीज फार्मर्स के द्वारा यूज़ की जा सके ताकि बेटर आउटपुट यहाँ पे निकल सके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिविजन पार्ट पर। नेक्स्ट आ जाते हैं द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी टू बूस्ट द निवेशक दीदी फाइनेंशियल लिटरेसी ड्राइव, जिन्होंने एक MOA मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया इन अप्रैल 2025। किसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया? IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स के साथ इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट आ जाते हैं टू टैकल स्किलिंग चैलेंजेस द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने को होस्ट किया एक हाई लेवल राउंड टेबल इन अप्रैल विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च द इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर इनिशिएटिव। तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ताकि इंडियंस को स्किल करने में यहाँ पे मदद की जा सके, नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है। नेक्स्ट इन अप्रैल यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, इन्होंने इनॉग्रेट किया स्टेट ऑफ द आर्ट लैब को एट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसका फोकस रहेगा कि इन
एनालाइजिंग क्रूशियल एविएशन टूल्स जैसे डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को। और ये जो लैब है ना, बेसिकली ये आपका एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करेगी, ब्लैक बॉक्स लैब की तरह। 9 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से इसको इस्टेब्लिश किया गया है, राइट। एंड जो भी क्रैश के टाइम पे, एक्सीडेंट्स के टाइम पे जो भी फॉल्ट्स हो सकती हैं उनको बेटर किया जा सके एंड फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम रिपीट ना हो सके, इसीलिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। इन्होंने लॉन्च किया एक डेडिकेटेड डिजिटल पोर्टल इन अप्रैल टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसने डेवलप किया इस पोर्टल को। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, IWAI के द्वारा। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्रैल में? तो जम्मू एंड कश्मीर। Next, who received the final authorization to operate as a online payment aggregator from RBI in April 2025? तो वो है भारत पे रेजिलियंट पेमेंट सिस्टम एंड भारत पे एक्स। ये वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके अंडर भारत पे यहाँ पे ऑपरेट करेगा एज ए ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट, इन अप्रैल इडुक्की डिस्ट्रिक्ट इन्होंने अर्न किया एक ग्रीन टैग आफ्टर सक्सेसफुल वेस्ट मैनेजमेंट एफर्ट्स अंडर द मालिन्य मुक्तम नवा केरलम कैंपेन। ये इडुक्की कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? देखो केरलम, तो ये केरला से बिलोंग करता है, करेक्ट। ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में था। यहाँ पे बेसिकली क्या था, जॉइंट एफर्ट से, लोकल बॉडीज के एफर्ट से, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, कंपनीज के एफर्ट से यहाँ पे कैंपेन लॉन्च किया गया था कि हम वेस्ट वाटर को या फिर वेस्ट जो भी जनरेट हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करेंगे एंड सस्टेनेबली उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेट इन इंडिया हुज इंडिजीनियस टेक्सटाइल रेंडर सिल्क एंड खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स जिनको भी GI टैग मिला। तो ये रेंडर सिल्क, इसको एरी सिल्क के नाम से भी जानते हैं, राइट। एंड खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स, इनको GI टैग मिला। ये दोनों मेघालय से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ इन अप्रैल 2025 टू बूस्ट बायलैटरल कॉटन ट्रेड एंड एनहांस कॉपरेशन इन कॉटन प्रोडक्शन, ट्रेड ट्रेंड्स, प्राइसिंग एंड मार्केट इनसाइट्स। तो ये रहेगा ऑस्ट्रेलियन कॉटन शिपर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज नॉट अमंग द टॉप 5 एयरपोर्ट्स अनाउंस एट द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2025 जो कि मैड्रिड स्पेन में हुआ था? तो इनमें से टॉप 5 में कौन सा है? हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप 5 में नहीं आता है। सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट फर्स्ट पे, दोहा एयरपोर्ट कतर का सेकेंड, टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट थर्ड पे, सियोल का इंचियोन एयरपोर्ट फोर्थ पे एंड टोक्यो का नरेता इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान में ये 5th पोजीशन पे। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान इन्होंने हेड किया इंडिया का डेलीगेशन टू द 2025 का एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक, राइट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये मीटिंग हुई कहाँ पे थी? तो ये मीटिंग नेपाल में हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट, किस कंट्री वो पहली अफ्रीकन नेशन बन गई एंड चौथी कंट्री, करेक्ट, जिन्होंने साइन किया एक पार्टनरशिप, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो बांग्लादेश वो कंट्री बन गया है, राइट। या फिर हम बोले मॉरिशियस, नॉट बांग्लादेश, मॉरिशियस वो कंट्री बन गया है जो कि पहला अफ्रीकन नेशन एंड 4th नेशन बना जिन्होंने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया ISA के साथ। इससे पहले अगर हम देखें बांग्लादेश, भूटान एंड क्यूबा ये ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। बांग्लादेश से बात करें तो बांग्लादेश वो कंट्री बन गया जिन्होंने अभी आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है? बेसिकली नासा ने लॉन्च किया था कि हम स्पेस का पीसफुल एक्सप्लोरेशन करेंगे। जो जो कंट्रीज इसको साइन करेंगे वो अग्री करती हैं सर्टेन गाइडलाइंस को एंड प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, जो कि स्पेस में फॉलो किए जाएंगे फॉर पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस। नेक्स्ट, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ अ 6 मेंबर हाई लेवल कमेटी जो कि सेबी के द्वारा एस्टेब्लिश की गई फॉर रिव्यूइंग द प्रोविजंस फॉर ऑफिशियल्स टू डिस्क्लोज एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो कौन है उस 6 मेंबर कमेटी के चेयरपर्सन? वो है प्रत्युष सिन्हा। एंड आप ये देखेंगे विद इन 3 मंथ्स आप इस कमेटी को अपनी यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, जनरल KS खामती शिफादौन, ये प्रेसिडेंट है किस कंट्री के जिनका रिसेंटली निधन हो गया 102 की एज में? तो ये लाओ PDR, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के ये प्रेसिडेंट है जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने इनॉग्रेट किया है एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल को 10 अप्रैल को विद द एम ऑफ प्रोमोटिंग टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज? तो वो लद्दाख रहेगी, राइट। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन्होंने पार्टनर किया महाराष्ट्र फिल्म स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ताकि इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि डेडिकेटेड है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, AR VR फैसिलिटीज़ के ऊपर। ये जो इंस्टीट्यूट है
ये दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी गोरेगांव मुंबई में रहेगा। आपसे पूछा जा रहा है उस इंस्टीट्यूट का नाम बताओ, नेम दैट इंस्टीट्यूट, तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन अप्रैल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्होंने अनाउंस किया कितने % का हाइक फॉर द मटेरियल्स जो यूज़ किए जाएंगे मिड डे मील स्कीम के अंडर, जो कि है पीएम पोषण स्कीम। तो 9.5% का यहाँ पे हाइक देखने को मिला है उन प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट, किस कंट्री ने को होस्ट किया इनॉग्रल एडिशन ऑफ AI किमे फेस्टिवल, ये AI किमी ये एक बेसिकली आपका अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज है। इंडिया एंड किस कंट्री के द्वारा मिलकर इस एक्सरसाइज को कराया गया? तंजानिया के द्वारा कराया गया। इस बार तंजानिया में हमें देखने को मिली थी। INS चेन्नई एंड INS केसरी, इन दोनों का पार्टिसिपेशन इस एक्सरसाइज में देखने को मिला था। नेक्स्ट, नेम द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जिसने सक्सेसफुली टेस्ट किया DRDO को यूजिंग सुकोई 30 Mark 1 फाइटर एयरक्राफ्ट इन अप्रैल 2025। तो गौरव उसका नाम रहेगा लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का। नेक्स्ट है पद्मा अवॉर्डी कुमुदिनी लाखिया जिसका निधन हो गया अप्रैल में, राइट। ये कौन थी? तो पद्मा अवॉर्डी कुमुदिनी लाखिया जी ये कथक डांसर थी जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया एंड इनको जनवरी 2025 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्माश्री से 1987 में एंड पद्मा भूषण से 2010 में। नेक्स्ट, व्हेन इज UN इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑब्जर्व्ड, ताकि जो स्पेस का एरा स्टार्ट हुआ है ह्यूमन काइंड्स के लिए, राइट। हम नए नए प्रोडक्ट, हम नए नए स्पेस मिशंस भेज रहे हैं, राइट, टू एक्सप्लोर इट। तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 अप्रैल को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अचीव किया सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन, राइट, एंड वुडन फैसिलिटी डेटिंग बैक ऑलमोस्ट 1948 उसको रिप्लेस किया गया था। तो ये 3D स्टेशन बनाया गया है कहाँ पर? ये वेस्ट जापान रेलवे कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इवन अगर आपको याद हो तो जापान के द्वारा पहली वुडन सैटेलाइट भी बनाई गई थी। इस पहली वुडन सैटेलाइट का आप मुझे नेम बताओ क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने होस्ट किया 8वां मीटिंग ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑन एशियन इंडिया ट्रेड्स एंड गुड एग्रीमेंट जो कि कंक्लूड की गई 14 अप्रैल 2025 को? तो इंडिया ने होस्ट की थी इस जॉइंट कमेटी मीटिंग को। टेक अ नोट ऑफ दिस। इसके बाद आ जाते हैं ड्यूरिंग द ऑफिशियल 2-day विजिट ऑफ इटालियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो तजानी, ये इंडिया की विजिट पे थे। इंडिया ने एंड इटली ने मल्टीपल MOU साइन किए टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन विच फील्ड? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, नए यूज केसेस लाने के लिए, नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज लाने के लिए ये यहाँ पे MOU साइन होता हुआ हमें दिखा इन दोनों कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट आ जाते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ न्यू स्कीम ऑफ पेट्रोकेमिकल्स द स्कीम ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्लास्टिक पार्क्स इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, राइट। कितने प्लास्टिक पार्क्स इस्टेब्लिश करने की बात की गई है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया? तो 10 ऐसे प्लास्टिक पार्क्स इस्टेब्लिश करने की बात की गई है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस देंगे, राइट, इन द केमिकल सेक्टर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, करेक्ट। एंड ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम करेंगे जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ रहेंगी, कॉमन फैसिलिटीज़ रहेंगी ताकि रिसर्च के ऊपर भी काम किया जा सके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंट्रोड्यूस अ न्यू कैटेगरी कॉल्ड ब्लू कैटेगरी। ये लॉन्च किया गया इंडस्ट्रीज के लिए। ब्लू कैटेगरी क्या है? कोई इंडस्ट्री है मान लो, राइट, उसको ये ब्लू कैटेगरी सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जाएगा अगर वो जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, राइट, वो एक डिजायर्ड लेवल से कम है, राइट, जो गाइडलाइन सेट की जाएंगी। एंड 3 साल के लिए इनको यहाँ पे 2 साल के लिए इनको यहाँ पे सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा एंड 2 साल के बाद वापस से इनको उस ऑर्गेनाइजेशन को, इस फैक्ट्री को या इंडस्ट्री को इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इससे होगा क्या? अगर इनके पास ब्लू सर्टिफिकेशन है तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनीज जो इन्वेस्टर्स हैं, VCs हैं, वो यहाँ पे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे एंड ये गाइडलाइन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाया जा रहा है कि क्लाइमेट के ऊपर जो कंपनी फोकस कर रही है उसको हम आगे लेके बढ़ेंगे और जो नहीं कर रही उनको पहले ग्रीन ट्रांजिशन करना पड़ेगा। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया है ये नया ब्लू सर्टिफिकेशन को? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट, डैनियल रॉय गिलक्रिस्ट नोबा, इनको रिलेट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो एक्वाडोर के ये यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन इन अप्रैल 2025। तो ब्राइस क्लॉटेर ओलिगन नुएग्मा, इनको अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट वेयर DRDO इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा फील्ड ट्रायल ऑफ लैंड वर्जन ऑफ व्हीकल माउंटेड Mark 2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को। तो आंध्र प्रदेश में, राइट, ये स्टैब्लिश किया गया है।
नेक्स्ट पॉप स्टार केटी पेरी, इन्होंने ये एंड 6 वीमेन मतलब 5 वीमेन और मतलब टोटल 6 वीमेन स्पेस में गई थी अभी। ब्लू ओरिजिन कंपनी ने इनको न्यू शेफर्ड रॉकेट की मदद से स्पेस में भेजा था फॉर टूरिज्म मिशन। करेक्ट। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है उस स्पेस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने इस मिशन को कैरी आउट करा, तो वो है ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट इन अप्रैल द पेरुवियन नोबेल प्राइज विनर मारियो वर्गास लॉसा, राइट, इनका निधन हो गया 89 की एज में पेरू में। पूछा जा रहा है ही वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन विच फील्ड इन 2010, तो इनको लिटरेचर से सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से। नेक्स्ट ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड क्वांटम डे, जो कि हम 14 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, क्यून्यू लैब्स ने, राइट, एक जो कि एक क्वांटम साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है, इन्होंने आईआईटी मद्रास के साथ मिलके लॉन्च किया एक चीज़ जो कि क्या रहेगी, क्यू शील्ड। ये बेसिकली क्यू शील्ड क्या रहेगी, साइबर सिक्योरिटी को ये एनहांस करने का काम करेगी, राइट, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी, बेटर प्रोटोकॉल्स, बेटर आपके क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी, ताकि जो आज के टाइम पे एआई की मदद से जो हैक्स बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके। करेक्ट। तो ये आपका क्यू शील्ड सर्विस रहेगी जो कि लॉन्च की गई है, वर्ल्ड का पहला यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर सीमलेस क्रिप्टोग्राफी मैनेजमेंट अक्रॉस क्लाउड, ऑन प्रेमाइस एंड हाइब्रिड एनवायरमेंट्स, ताकि डाटा आपका सेव रहे, कोई हैक ना हो सके। Students, is our homework section. First question, tell me which edition of the Global Technology Summit stars in New Delhi? Which edition? Second question, tell me recently who has launched Unified Health Insurance Scheme? Right, who launched it and it was launched by which state also? Tell me that. Third question, recently who celebrated the traditional harvest festival honoring the farmers and unity across regions? Okay, this is an easy one, our country India, right? Next, tell me which state became the first state to implement SC categorization. SC caste was divided into multiple categories. How many categories and which state did this? That became the first state to do so. Then fourth question, tell me recently which campus has recently opened in Dubai recently? That is an Indian campus. Fifth question, what is the repo rate now? And what percent of repo rate was reduced by RBI recently? Tell me that also. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.